मेरे पास आप सबके मेडिकल रिपोर्ट्स हैं. Right now I have the medical reports of all of you, summary of all of you, and in total there are 105 patients and 56 are for 72-hour program and 49 for they have been staying here for few days or they are going to stay for a longer period. 2 participants from outside country, one from Mauritius, Manand Prasad, and one from Nepal, Suma De. Interestingly, पिछले महीने last month we had a participant from Nepal. In fact, the Ministry of Health Nepal director came here so that they can collaborate with us and so that the Nepal patient need not to come here, they can treat themselves there itself. So that's a good thing. Incidentally, from Mauritius also, there were some people here who wanted to open hospital there. कोशिश ये है कि जो जहाँ पे रहते हैं वहीं उनका इलाज हो जाए, वही अच्छा रहेगा, इतना दूर ट्रैवल करके ना आने की जरूरत पड़े. So before we start, I welcome the Malaysian delegates who are with us. Dr. Najib, you already know by now, here he is, and Dr. Fernando, you both have to come here. You both have to, or let me come there, that is easier. Right. Welcome, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Mr. Muru is also there. Please come. You're all already in a good get-up. Thank you. Dharan, he's a photographer also. Yeah. Thank you. And we have a delegate from Singapore, Utana. Utana is a German citizen, having a clinic in Singapore. Okay. Thank you. Huh? Yeah. Okay. Okay, thank you. हम में से ज्यादातर लोगों के पास इस हॉस्पिटल में यहाँ पे 72 आवर्स है, जिसमें से 24 घंटे निकल गए. Very less time, lot of things to do. So straight away, let's come to the point. I have a complete list of all the patients here, and I see 45% of the patients here are diabetes patient also. Why I say also this means डायबिटीज के साथ और बीमारी होंगी, लेकिन 45% पेशेंट में डायबिटीज जरूर है. आप में से करीब 20% ऑफ यू हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज बोथ. 38%, 1/3 से ज्यादा क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं यहाँ पे. 35% ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं. थायराइड 11%, कैंसर 10%, हार्ट के 8%. All major disease, there are some people we can find out जो कोई ना कोई बीमारी, जितनी सारी बीमारी हमने सुनी है, हर बीमारी की कोई ना कोई आप में से जरूर है. सबसे youngest patient is Moksha, 8 years only. Oldest is Rajesh Kumar, 83 years. Kavita Thakur, the patient who is taking most number of medicine. Kavita Thakur is there. सबसे ज्यादा दवाई आप ले रहे हैं, इंसुलिन भी ले रहे हैं. एक राकेश सरागोई हैं, सबसे ज्यादा दवाई आप भी ले रहे हैं. इरादा यह है दवाई छूट जाए, बीमारी छूट जाए, इतना सही है. सो आवर इंटेंशन, फ्री फ्रॉम मेडिसिन एंड फ्री फ्रॉम डिजीज. सो व्हेन आई से मेडिसिन, जब मैं बोलता हूं दवाई, here I'll use both the language, right? I'll say in Hindi and then translate in English, right? So जब मैं बोलता हूँ दवाई, when I say medicine, so the moment you hear the word medicine, जैसे आप सुनते हैं दवा, what it means? Tablet? Is it tonic? Is it injection? If you look at the dictionary, what is the definition of medicine? दवाई का definition dictionary में क्या है?
दवाई मायने कोई भी चीज, साइंटिफिक चीज जो आपको ठीक रखती हो या ठीक करती हो, वो कुछ भी हो सकता है. मेडिसिन मीन्स इन डिक्शनरी any science which can prevent and treat disease. That's all. Any science. So medicine can be anything in any form. So the moment you think of medicine, जैसे आप सोचते हैं दवाई, दिमाग में आता है टैबलेट मिल जाए, टॉनिक मिल जाए, इंजेक्शन, right? So there are other form of medicines. Rather, these are not the medicine. These are drugs. Can drug be medicine? ये केमिकल्स है, क्या केमिकल मेडिसिन हो सकती है क्या? अगर ये होती, had it been a medicine, we all would have got cured. अगर ये दवा होती तो हम सब ठीक हो चुके होते अभी. आज अभी ब्रीफली 5 दवाइयों की बात करेंगे. टुडे नाउ विल टॉक ऑफ 5 मेडिसिन. One medicine is gravity as medicine. So here when I am standing, there are 2 power working with me. 2 ताकत काम कर रही है. एक law of gravity, one law of gravity which is pulling my blood towards the earth. और दूसरा आपका हार्ट जो आपके ब्लड को ऊपर ले जा रहा है. Your heart which is pushing, taking the blood towards upward. Heart taking the blood upward, gravity pulling the blood down. There is a balance. If this balance is disturbed, it is called chronic kidney disease or even a lung disease, sometimes even a heart disease. Hypertension, the disturbance of the balance between the gravity and the heart, the 2 forces. 2 ताकत है हमारे इस वक्त मेरे ऊपर. एक ताकत जो जमीन से मुझे नीचे पुल कर रही है, ग्रेविटी जिसे बोलते हैं, और दूसरी ताकत हमारा हार्ट की जो ताकत है, हाथ पे पंप. इन दोनों के बीच का बैलेंस जैसे ही बिगड़ जाएगा, दैट कॉजेज डिजीज. सो इस बैलेंस को वापस लाना, ब्रिंगिंग बैक दिस बैलेंस बिटवीन हार्ट and gravity can be a medicine. Gravity as medicine. How? For example, I am standing like this. मैं अभी ऐसे खड़ा हूं. अगर ऐसे मैं 20 minutes खड़ा रहा हूं, if I stand like this for 20 more minutes without any movement, what will happen? क्या होगा? The gravity will keep on pulling and my heart will lose. So most of the blood will be towards my legs, lesser blood on the head. So मेरा दिमाग को सोच नहीं पाएगा. That is the time I will fall. आप सबने बचपन में असेंबली में देखा होगा बच्चे गिर जाते हैं. You have seen in a childhood, children they fall in the assembly. When they fall, जब वो गिरते हैं, that is a medicine. वही दवाई है. जितने ही heart and earth at the same level. अब it regains the blood circulation within 20 minutes or less than that. The child get up again. वो लड़का दोबारा खड़ा रहता है. उस 15-20 मिनट में आप पानी छिड़किए, झाड़ फूक कीजिए, right? You sprinkle water, you pray, do anything. Anyhow, he has to get up. Whatever you do or whatever you don't do. So that posture of falling is a medicine. वो जो गिरा हुआ पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, वही दवा है. उसको उस वक्त खड़ा कर देंगे. If you force him to stand, he will die. Right? So here no drug can help to regain. कोई भी मेडिसिन, कोई भी ड्रग उसकी मदद नहीं कर सकती. वो posture मदद करेगी. That posture is the only thing which can help at that moment. Nothing else. जो माउंटेन में जाते हैं, sometime as an accident,
some mountaineer, they get hanged like this, right? Accidentally. So when they are hanging for more than 20 minutes, the blood starts coming down. Can they fall? क्या वो गिर सकते हैं? They cannot. So they die. तो बोलने का मतलब जो गिरा हुआ posture है वही दवा है. For example, अभी मैं ऐसे बैठ गया. Right now I'm sitting like this. Remember in Corona time, in Malaysia also, Singapore also, India, TV में आपने देखा, in television you have seen, many people were not able to breathe. Do you remember? The scarcity of oxygen cylinder. Oxygen नहीं मिल रहा था, right? And most of the picture were patient lying in the car. कार के अंदर वो बैठे थे और बैठे नहीं ऐसे लेटे थे. Gasping for air, right? सांस नहीं ले पा रहे. याद आ रहा, आपने सबने देखा होगा. और उनके रिश्तेदार, their family member in the car trying to go one hospital or other hospital to get an oxygen cylinder. Do you remember that scene mentally, right? They were not getting oxygen. उनको oxygen नहीं मिल रहा. But there are so much oxygen here. Why they are not getting oxygen? How they are not getting oxygen? जब ऑक्सीजन यहाँ हवा में है तो उनको क्यों नहीं मिल रहा? क्यों वो जा रहे हैं ढूंढने? If there is so much oxygen in the air, why they are not getting oxygen? Because, very important, this is called posture as medicine. इसे बोलते हैं posture as medicine. इस वक्त आप सब, at this moment, all of you make your posture like this. And the moment you do like this, you will not able to breathe. Try it. एक बार करके देखिए, like this. Your breath has become difficult, right? अब इसके साथ अगर भय जोड़ दें, if you add fear to it, fear plus posture, unable to breathe. Fear, I will die. If you believe you will die, along with that, this posture, you are finished. So that was the period through propaganda media. You are made to believe you will die. There is no oxygen. There is oxygen, but it is a belief. That period, we had COVID centers, our own COVID centers. उस वक्त हमारे COVID centers थे. हम उन्हें बोलते थे flu center. We did not call it COVID center, we called it flu. Flu आपको पता है, हर साल होता है. You know flu, every year we suffer from. That is cough, cold, fever. Every year. It is inevitable. हर साल एक बार बीमार पड़ना ही पड़ना है, दुनिया में हर एक को. But that year, flu was known as corona. Flu का मतलब कोरोना था. There was no flu that year. So in our flu center, COVID center, there was 1100 beds and it was free. Anybody can come. Those who were on oxygen cylinder, but they exhausted all their money, जिनके पैसे खत्म हो गए हॉस्पिटल में, तो with oxygen cylinder in ambulance, those patients were dropped in our hospital. It was free. और हॉस्पिटल का एक नियम था कोविड सेंटर का, कैसा भी पेशेंट तो हमें लेना ही लेना है, अगर वो जिंदा है तो चूज करके नहीं लेना है. Whatever may be the situation of the patient, in whatever condition, we have to admit it. That was the rule which I made, irrespective of his health condition. So majority of the patient, they used to come with oxygen cylinder at the last, so-called last stage. कि अब ये बचेगा नहीं. What we did, now you do one thing, instead of like this, you're sitting like this, right? Now if you sit like this, your lung capacity increased by 20% right now.
इस वक्त आपकी जो लंग की कैपेसिटी है 20% ज्यादा होगी। आप महसूस करेंगे आपकी सांसें थोड़ी अच्छी आ रही होगी, राइट? You might be feeling that you are able to breathe better in this posture. So, first thing, the moment we receive the patient, by instruction, without any exception, हर पेशेंट का ऑक्सीजन सिलेंडर निकालना ही निकालना है. फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल, चेंज द पोस्चर लाइक दिस. राइट? पेशेंट्स were very weak and scared. बहुत ही वीक और कमजोर और डरे हुए. बहुत सारे पेशेंट बैठ ही नहीं सकते. They cannot sit. This means they can only lie down. Now, when I am lying down like this, जब मैं ऐसे लेटूंगा, like this, so you see, the heart is on the top. Heart ऊपर है, right? My lung capacity 20% less. This posture, the lung capacity 20% less. Breathing is difficult. Breathing is difficult. अब आप सोचिए, think, when you see any patient in the hospital, lung patient, how they lie down at the back like this. We change their posture like this. When you lie down like this posture, now the lung capacity 20% more and the breathing easier, right? Or even like this, still more, breathing easier. Acha, how we will know the patient is breathing better? हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट ठीक हो रहा है? फर्स्ट, पेशेंट विल टेल, राइट? पेशेंट ही तो बताएगा ना. जब वो सांस नहीं ले पा रहा था, आपको कैसे पता चला? When he was not able to breathe, who told you? How you know? The patient told. Now, if he is able to breathe, if he is comfortable, who will tell you? The patient will tell. No machine, only patient. Right? How much time? About 15 to 20 minutes. 15-20 मिनट के अंदर ही ब्रीदिंग वापस आने लगती है. 15-20 मिनट्स. ओके. अगर आप मशीन के माध्यम से जानना चाहते हैं, if you want to know through machine, so do you remember at that time most of you came to know for the first time something called oximeter? याद आ रहा है? जिंदगी में कभी नहीं देखा, वो पहली बार देखा. First time for most of you have seen oximeter, never before. And most of the people were scared. Everybody having oximeter at their home, सबके पास था. टीवी देख रहे हैं, डर के मारे ऑक्सीजन देख रहे हैं, what is my oxygen, right? When you are scared, you check your oximeter, it will be less. You do one thing, watch a horror movie and check your oximeter. डरावनी मूवी देखिए, उस वक्त चेक कीजिए, कम होगा ही होगा कम. Your breathing is controlled by your mind, right? उस वक्त in that posture, पेट के बल जब सो रहे, in that posture, when we check the oximeter reading from 60, 70, 80, 90, 95, within 40 minutes, every time. So the first medicine is gravity as medicine. This works for kidney patient. Kidney patient के लिए काम करता है. आप में से यहाँ पे, among you, 1/3 of you are kidney patients, as is in this. Kidney patient, as you say, I am not saying you are a kidney patient. You are saying you are a kidney patient. मैं तो आपको बताऊंगा आप kidney patient है भी कि नहीं. I will tell you, right, tomorrow whether you are true kidney patient or false kidney patient, नकली patient. नकली patient मतलब पेशेंट को लगता है वो पेशेंट है, लेकिन वो है नहीं. उनको बता दिया गया है, विश्वास आ गया है उनको. Who is the true kidney patient? Kidney patient are the one, those who are having one first sign. Remember this. The first sign of kidney patient is less urine output.
पहला साइन पेशाब कम आना। कितना कम? करीब 400 ml से कम। हाउ लेस? अबाउट लेस देन 400 ml पर डे, राइट? सो आप में से वो लोग जो लोग सोचते हैं वो किडनी पेशेंट हैं, in 24 hours you measure how much urine you are able to pass. If you are able to pass 1 liter, probably you are not a true kidney patient. Probably. Why I am using probably? I'll come. तो ऐसे पेशेंट जिनका यूरिन आउटपुट 400 ml से कम है, द पेशेंट whose urine output are less than 400 ml, this means उनका यूरिन आउटपुट बढ़ाना, we have to increase their urine output. How? Posture as medicine, using gravity as medicine. How we do here? See, now we will take the help of gravity. And imagine this is a bed. You are lying here. This is your head. यहाँ सिर है, यहाँ पैर है. अब इसको अगर ऐसे कर देंगे तो पैर ऊपर हो जाएगा. The legs will be raised and head is lowered. This means because of gravity, the blood will be pulled towards head, right? The blood will be pulled towards the kidney from the legs. खून पैरों से किडनी की तरफ आएगा. इस तरह से बेड में जब लेटेंगे, when the patient lie like this for 2 hours, their urine output increases. Simple. How much? How many days? From the first day. If the urine output is 400 ml now, first day you do it for 2 hours, it will become 500 ml. Second day, 550 ml. Within 10 days, normal 1 liter. Gravity is medicine, right? So this means you don't need this hospital. You only need 6 bricks. आपको 6 ईंटों की जरूरत है बस. 3 ईंटें उधर, 3 ईंटें इधर. बेड को ऊंचा करो एक तरफ. Literally. और हमारे बहुत सारे पेशेंट्स, I will show you tomorrow. Many patients, we say don't come here, do at home. अगर ठीक नहीं होते तो आना यहाँ पे. वो नहीं आए कभी. And then when we ask after 10 days, then they say yes, now we are normal. And once you are normal, need not to do then. You can stop doing it. Even then it will be normal. You took the help of gravity to help and balance your kidney for a while. आपने किडनी को थोड़ा सपोर्ट दिया थोड़े दिन के. फॉर एग्जाम्पल, आपकी हड्डी टूट जाती है, your bone get broken. What you do? You give a support for few days, 10 days, 15 days, 20 days, don't move it. And once it joins, now you can use it. If any organ, any bone is broken, they need support for some time. Okay, when you gave the support, जब आपने support दिया वो टूटे हुए हड्डी को, उस हड्डी को कौन सी दवाई ने ठीक किया? Which drug cured, joined that bone? No drug, only your body. दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं बनी जो आपकी हड्डी को जोड़ दे. बनी है क्या? There is no drug in the world which can join your bones. No. Only you can do that. But the doctor can help support and make a plaster so that you don't move that. That is it. This means any organ, if it is broken, it needs some support for few days. That plaster becomes the medicine. Gravity becomes the medicine. If you don't do the plaster and still try to use the hand, अगर वो प्लास्टर ना करे, हाथ को फिर भी यूज करना चाहे जो टूट गया, अब उसको जुड़ने में कितना समय लगेगा? कभी भी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं. That is why you never get cured. If any organ is not functioning properly, you have to support correctly. It can be lungs, I told you. It can be kidney, right? How to support? Depending on what kind of problem you are having, there are different kind of postures. अलग-अलग postures हैं. For example, acidity बनती है. There is acidity.
right? Those who are suffering from acidity problem, or it is called GERD, gastric esophageal disease, right? Reflux disease, gastric esophageal reflux disease. Gastric esophageal reflux disease हार्ट अटैक की तरह उसके सिम्टम होते हैं. द सिम्टम आर सिमिलर टू हार्ट अटैक. जब गैस बनता है वही दर्द होता है जो कोई बोलेगा इसको तो हार्ट अटैक आ गया, राइट? एंजियोप्लास्टी करा दो, एंजियोग्राफी करा दो, इट इज जस्ट एन एसिड. अगर एसिड बन रहा है तो वो एसिड बाहर आता है, इट गिव्स अ पेन, दिस पार्ट, राइट? समटाइम sweating, sometimes weakness. So it is an impression, oh, it may be in heart attack. No, it is a gastric esophageal reflex. The gas is coming out, right? What to do? Use gravity as a medicine. Gravity को use करो दवाई के लिए. कैसे? I will show you. Now, here I am lying down in this posture, you see, like this. Now, when you are lying down, inside the food pipe is like this, right? So, in this posture, food pipe इस तरह से होता है कि इस posture में एसिड मुंह पे आएगा ही नहीं. इस रात को सोने से पहले, before sleeping in the night, the first 30 minutes, you sleep in this posture, lie down in this posture. Once you sleep, the posture is not in your control. एक बार सो गए तो कंट्रोल में नहीं है, बट सोने से पहले तो कंट्रोल में है ना. एसिड सेटल डाउन हो जाएगा, फिर कैसे भी सो जाएगी. ग्रेविटी बिकम द मेडिसिन. अब फॉर ईच वन ऑफ यू द रोल ऑफ ग्रेविटी कैन बी डिफरेंट, योर रिक्वायरमेंट कैन बी डिफरेंट. वो क्या आप ईच वन ऑफ यू हैव टू डू, that we are going to train in these 3 days, right? That is the first medicine. Now the second medicine is, we will talk about this in this rest, right? Tomorrow, day after tomorrow. Let's come to second medicine, time as medicine. To make you understand time as medicine, we have a small tool. वो पेन है यहाँ पे, पेन डिस्ट्रीब्यूट करना है अभी. So, अभी आपको टाइम एज मेडिसिन जितनी सारी बातें आज सीखेंगे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है. तो इसको समझने के लिए घर जाके आप समझा पाए तो ये टूल अभी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. इस टूल को अभी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसके माध्यम से आई विल टीच यू. राइट नाउ यू विल बी गिवन दिस टूल. थ्रू दिस आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द सेकेंड मेडिसिन, दैट इज, आप एक एक रो में ना 10-10 करके दे दो. एक एक करके देंगे ना, बहुत टाइम लग जाएगा. इनको समझाओ, एक एक रो में 10-10 दे दो, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आगे आगे. एक पेशेंट को खोल लीजिए, टेक इट आउट. लाइट यहां नहीं मिला शायद, उता नहीं मिला ना. आप जरा देखो, यहां भी नहीं मिला. इधर फर्स्ट रो, इधर भी नहीं मिला, यहां भी नहीं मिला, यहां नहीं मिला. आप देख लो. इधर यहाँ पे आ जाएगा. ओके, जिनको नहीं मिला मिल जाएगा. अभी शुरू करते हैं. यू फोकस हियर. आप यहां देखिए,
Now you see here, look at the pen. Carefully, when you look at the pen, you will see 4 rings here. आप यहाँ पे 4 रिंग देखेंगे. यहाँ पे टाइमलाइन है. There is a timeline from midnight to morning 8 a.m. 8 a.m. के ऊपर सन दिख रहा है. Above 8 there is sun. Then noon. Then 8 p.m. रात को 8 p.m. के ऊपर मून दिख रहा है. आपको देख पा रहे हैं. और उसका दोबारा मिडनाइट. ये टाइमलाइन को एक बार आपने देख लिया. 8 बजे सुबह के ऊपर सूरज देख लिया. 8 बजे रात चांद देख लिया. You have seen the sun and the moon, right? Now focus on these 4 rings. The first ring, try to find F. The first ring, try to find F. मिल गया. Second ring, O, join it. Third ring, O, join it. And fourth ring, D, join it. It becomes food. आप सबको food मिल गया. Imagine कीजिए एक दिन में ये food, इतना food आप खाते हैं. Imagine this food is the total quantity of amount of things which you eat in one day. This is the total food which you are eating in one day. What is that food? वो क्या खाते हैं, उससे कितना खाते हैं? No, but that is this much quantity wise. अब imagine कीजिए this F and O is your breakfast, say around 7 a.m. The second O is a lunch at 2 p.m. So place it at 2 p.m. Last D is a D for dinner at say 9 p.m. for most of you. इसका मतलब फूड को इस तरह से पूरे दिन में आप डिवाइड कर देते हैं. दिस मीन्स फूड यू डिवाइड इन द होल डे एज आई हैव शोन यू, राइट? Simple science, the simple rule, more you spread the food, more you become sick. जितना ज्यादा खाने को फैलाएंगे, जितना ज्यादा खाएंगे नहीं बोला मैंने. I am not saying more you, the quantity. I am saying amount you, when you spread the food in the whole day, more you spread the food, more you become sick. For example, अगर आपको किसी को बीमार करना हो, खाना यही है, D, dinner, push it to 12 night, midnight. वो डिनर को 12 बजे कर दिए रात के. सेम चीज खा रहा है वो. He is eating the same dinner, quantity and kind, but instead of 9 p.m. he is eating at 12 midnight or 11 p.m. So blood sugar higher, blood pressure high, weight high, sleeplessness, नींद नहीं आना वो भी ज्यादा, डिप्रेशन वो भी ज्यादा. अगर किसी को कैंसर बनाना हो, यू वांट टू मेक एनीबॉडी कैंसर पेशेंट, तो आपको इसको और स्प्रेड करना पड़ेगा. इंस्टेड ऑफ टेकिंग ब्रेकफास्ट एट 7 a.m. यू मेक इट 5 a.m. 5 बजे से लेके रात के 12 बजे तक उतना ही खाना खा रहे हैं, राइट? फ्रॉम 5 a.m. to 12 midnight, same amount of food, same kind of food, spread the food. Cancer, tumor, heart disease. अब रिवर्स कर लीजिए. 9 a.m. breakfast, FO. 2 p.m. lunch, O, second O. Dinner 6 p.m. 6 बजे आपने डिनर कर दिया. So you see, चारों रिंग पास पास आ गए.
all the 4 ring you closed. If you follow this one rule, only one rule, अगर आप एक ही रूल फॉलो करते हैं, घर ले जाएंगे ये पेन, only one rule, आपके घर में डायबिटीज के पेशेंट अगर हैं, बीपी के पेशेंट हैं, मोटा है पतला नहीं हो पा रहे, at your home there may be many kind of patient, BP, diabetes, मोटापा, obesity, just control the time, eat between 9 a.m. to 6 p.m. Don't control the kind of food, क्या खा रहे हैं कोई मतलब नहीं, कितना खा रहे हैं कोई मतलब नहीं. What is more important? 9 बजे से पहले नहीं खाना, 6 बजे के बाद नहीं खाना. The moment they do it, the moment they start doing it, within 1 day, blood sugar start dropping. Within 2 to 3 days, blood pressure start dropping. Within 7 days, weight start dropping. Within 10 days, pain goes away. Time as medicine, right? So, some people may negotiate. कुछ लोग argue करेंगे. अरे मैं तो सुबह ऑफिस चले जाता हूँ. I cannot eat so late, breakfast like that. Have little bit of flexibility. Okay, negotiate. Instead of 9 a.m., make it 8 a.m. Instead of 6 p.m., make it 7 p.m. Even then it will work. तब भी ये काम करेगा, थोड़ा और टाइम लग जाएगा. तो ये सिंपल रूल, टाइम एज मेडिसिन. When you came here, you might have noticed we are trying to use time as medicine. Irrespective कौन सी बीमारी है, हमें ये पता है कि बीमारी कुछ भी हो, सिर्फ इसको कर देंगे तो बहुत सारी चीज ठीक होने लगेगी. जितनी भी बॉडी की दिक्कतें हैं वो ठीक होने लगी, हमें ये पता है, ये हमने देख लिया है. कैसे ठीक होती है, हाउ इट गेट क्योर, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, विच विल डिस्कस टुमारो, राइट? सो द पीपल, द IT पीपल, दोज हु वर्क एट नाइट, रात को काम करते हैं 2 बजे जूम मीटिंग, दे आर द मोस्ट वल्नरेबल फॉर कैंसर. उनमें ज्यादा कैंसर होता है. नाइट शिफ्ट में जो रहते हैं, पीपल हु वर्क इन द नाइट शिफ्ट, दे ईट एट नाइट, होल नाइट, दे स्लीप द होल डे. देयर लाइफ स्पैन इज 10 years less than normal population, right? So they don't have a choice, they're forced to eat at night. But many of us having a choice, but we decide to watch Netflix रात को 12 से 2 और कुछ ना कुछ खा रहे हैं, थोड़ा सा ही खा रहे हैं. Even if you're eating very small amount, but you spreading the time, right? आप टाइम को स्प्रेड कर रहे हैं. तो you can become a doctor, you always keep this pen like this, right? जब भी कोई आपको अपना हेल्थ का कोई भी इशू बताए, कोई भी इशू बताए, सुन लीजिए उसको और फिर ये लास्ट में ये निकालिए and give this solution. Eat between, say, I know the people, they will not follow much, so you, with flexibility, 8 a.m. to 6 p.m. When you say 6 p.m., surely they will eat by 7 p.m. Even then it will work, right? Time as medicine. क्या ये काम करेगा? Will it work? I will show you tomorrow, because by tomorrow morning it will be already more than 1 day. You are doing it already. एक दिन से ज्यादा हो गया आपका, तो कल आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, आपका वेट, I will present it to you. Tomorrow I will present the result of time as medicine. Tomorrow also I will present the science of time as medicine. इसका साइंस क्या है और ये कैसे काम करता है और आपने कितना काम किया, ये भी, right? So remember, medicine, what is medicine? Anything which can prevent and cure disease, right? And interestingly, most of such kind of medicine are free. You cannot buy it. Can you buy it, right? Can anybody hold it? No, it is free. So make this free medicine available to most of you. Anybody whom you meet, always keep this pen in your pocket. It will be a reminder that you have to follow first. सबसे पहले तो आप ही को फॉलो करना है इसको. जब आप ठीक होने लगेंगे
तो लोग आपको फॉलो करेंगे। जब आप ठीक होंगे तो ही लोग फॉलो करेंगे। Only when you get cured, only then the people will follow. Otherwise, nobody will follow. So now, after time as medicine, the next is food as medicine. Your food becomes the medicine. आप में से कितने लोगों को DIP डाइट पहले से ही पता था before you joined here? Oh, most of you, right? Most of you already knew about the DIP diet. DIP diet I have innovated about 11 years back. 11 साल पहले मैंने DIP डाइट का इजाद किया। आप लोगों को कुछ को आइडिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष डिड अ क्लिनिकल ट्रायल, DIP डाइट पे क्लिनिकल ट्रायल किया। National Health Ministry, Government of Nepal, they did a randomized control trial on DIP diet. Even in Malaysia, Dr. Aziz did, your friend Dr. Aziz, he did a clinical trial on DIP diet with Lincoln University. DIP diet इकलौता ऐसा डाइट है जिसका randomized control trial 3 देशों में हुए independently. It is the only diet in the world whose randomized control trial done separately by 3 different countries. And they came up with the conclusion, it is good for kidney patient, heart patient, diabetes, BP, obesity and bone disease. So DIP diet के बारे में, about DIP diet, I'll talk about it tomorrow more in detail, but very important, along with the time as medicine, why not to use DIP diet, right? Rather than eating anything, within that time frame, if you decide to eat DIP diet, then the speed of improvement will be even more, right? तो जो speed of improvement है, वो उससे भी कई गुना ज़्यादा हो। So this becomes the third medicine, the DIP diet. So here it is already 24 hours since you are following DIP diet. Let's see what happens by tomorrow. Your blood sugar, blood pressure, we are noting everything down. How much your pain reduced, we are noting that down also. सारा कुछ हम लिख ही रहे हैं, आपको कल present करेंगे by this time about improvements, etc. Fourth kind of medicine, that is earth as medicine, which you are already having right now. जो medicine अभी भी आप ले रहे हैं जब आप बैठे हैं, right? Zero voltage. By now it is already clear with you. आप सबको already पता चल चुका है इस वक्त तक कि जब आप जमीन से जुड़ते हैं, when you are connected with earth, your body is at zero voltage. That is the time when your immunity is very, very strong and you start getting cured. एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं. My friends from Malaysia, you came, and the time zone difference is about 2.5 hours. 2.5 hours. This means अभी यहाँ पे से 8 बजे हैं. Right now it is 8 o'clock. What is the time there? 10:30. 10:30, right? So this means for Dr. Narjeet, it is not 8 p.m. For him, it is 10 p.m., 10:30 p.m. This means his body is preparing to sleep. इनकी body अभी नींद के मोड में आ चुकी है, because इनके लिए इनकी घड़ी में मलेशिया के कितना टाइम हो रहा है? 10:30. His body is set according to Malaysia 10:30 when he sleep every night. But your body right now is 8 p.m. That is body clock. My body clock and his body clock is different by कितना difference है? 2.5 hours. So this means if he stay here for a few more minutes, he will fall asleep here only. थोड़ी देर और यहीं बैठे रहेंगे तो यहीं नींद आ जाएगी इनको, right? So because his body clock is not set according to India, but when he is connected through this with the earth, now slowly his body clock is set according to India, right? That is called jet lag. Jet lag आपने सुना? Jet lag क्यों होता है?
क्योंकि हम जिस जियोमैग्नेटिक फील्ड से आए हैं हमारा बॉडी उसी को फॉलो करता है। अगर हमने जियोमैग्नेटिक फील्ड को बदल दिया तो हमारी बॉडी क्लॉक उस जगह के हिसाब से हो गई। बदलना ही नहीं है, नॉट ओनली यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द लैंड, यू हैव टू रीसेट एवरी डे। हर दिन आपको जमीन से जुड़ना है। डू वी डू इट? क्या हम करते हैं ऐसा? नहीं करते। तो बॉडी क्लॉक जब बिगड़ जाता है उसका एक कारण है, वन रीजन व्हेन वी चेंज द लैंड, एक जगह से दूसरी जगह। सेकेंड रीजन व्हेन वी डोंट टच द अर्थ एवरी डे। हम ज्यादातर लोगों ने अपना धरती चेंज नहीं किया, बट वी डोंट टच द अर्थ एवरी डे। जब हम रोज धरती को नहीं छुएंगे बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब होगा, तो हमारा पेट, हमारा हार्ट, हमारा किडनी, our all the organs, kidney, heart, stomach, they are like musician. You understand musician, right? Imagine this is an orchestra, guitarist is here, flute is there, tabla is there, ये सारे अच्छे musician हैं, but if there is no coordination, what will happen? That sound will be noise, not music, right? वो तकलीफ देगी हमें, it will be not, yes, lack of coordination, so that will not give a soothing sound for us, it will be disturbing. If there is a coordination between all the musicians, the sound becomes music. Similarly, if there is a coordination between all the organs, the life becomes music, right? So how to make the coordination? Touching the earth every day. How many hours? कितने घंटे? 10 hours. Not possible. 10 hours with earth, धरती के साथ जोड़े दो ही लोग रह सकते हैं। एक तो जो भिखारी है, गरीब है, चप्पल ही नहीं है, वो रहता है। The beggar, they stay on earth 24 hours. They are not sick. They are not severely sick like this. Or anybody who is saint, go on Himalaya, right? The other way to be in touch with earth for 10 hours is 0-volt bed sheet on which you are lying down. अभी आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पेट की तकलीफ है, कॉन्स्टिपेशन है, राइट? तो ये कॉन्स्टिपेशन ठीक ही नहीं होता, कुछ भी कर लो। Your stomach works in coordination with the rest of the organs, but if there is no coordination, stomach will not work efficiently. How to get coordination? कैसे coordination हो? Body clock set होगा, कितने बजे हमारा पेट खाली होना चाहिए, कितने बजे हजम होना चाहिए, when to digest, when to excrete. It is all about timing. Here, 0 voltage touching the earth plays an important role. लेकिन जिस तरह के माहौल में हम रहते हैं, हम धरती को रोज 10 घंटे के लिए नहीं छू सकते, तो दूसरा तरीका क्या है? 0-volt बेडशीट, जिसपे आप ऑलरेडी आप सो रहे हैं, राइट? उसका साइंस थोड़ा बहुत आपने समझा, you already understood the science in the morning, and more you will understand tomorrow. But that is earth as medicine, the fourth one, right? The fifth one, the last for today, that is heat as medicine. You have seen, some of you have experienced hot water immersion. आप में से कुछ लोगों ने hot water immersion किया है? Many of you, right? Many of you. And especially for kidney patient, you have done hot water immersion. So the idea is using heat as medicine. Even many Panchkarma therapies, we are using heat. Panchkarma therapy आप लोगों ने की, आपने देखा कुछ थेरेपीज में हीट को यूज कर रहे हैं. Heat as a medium, and through heat activating certain kind of immunity in the body. लेकिन वो कब, कितना, कितनी देर के लिए, where, how much, right? How much amount of heat, for what quantity of heat, this is all science. This is all you have to learn in these 3 days. Only that much which is concerning your disease, जो आपकी तकलीफ के लिए. For example, some of you came for joint pain. कुछ लोग joint pain के लिए आए, जैसा मैंने देखा उसमें. This means if you are able to penetrate heat on the joints start getting cured on its own.
याद रखिए, रिमेंबर, like the hand, if it get broken, who will cure the hand, the broken bones? Only you, only your body inside, but you have to give a circumstance, its surrounding protection. Similarly, if your joints are damaged, who can cure it? No medicine, only your body. If you give a surrounding, what kind of surrounding it needs? Heat. How much heat for how long? That is science, that is our work. यही आपको सिखाना है, यही आपको सीखना है. Heat as medicine. For kidney patient, how much heat, how much time, where all heat? For joint pain patient, how much heat, how much time? For cancer patients, heat as medicine. For different kind of patient, patient on pain, fibromyalgia, पूरे बॉडी में दर्द रहता है, ऐसे है कुछ पेशेंट, राइट? तो पेन किलर आप खाएंगे, व्हेन यू टेक अ पेन किलर द पेन वैनिशेस. इट इज नॉट वैनिशिंग, इट इज सबसाइडिंग एक्चुअली, जब तक दवाई है. बट इफ यू गिव हीट, बॉडी करेक्ट्स, बॉडी उसको ठीक कर देता है, दबाता नहीं, उसको ठीक कर देता है. तो हमें हीट यूज करना है, पेन किलर यूज नहीं करना, क्योंकि हमें ठीक कर देना उसको हमेशा के लिए, राइट? तो हीट एज मेडिसिन विच विल लर्न एक्सटेंसिवली टुमारो. कल हम उसको सीखेंगे, और उसको सीखने के लिए हम कुछ कैरेक्टर्स यूज करेंगे. टुमारो विल यूज सर्टेन कैरेक्टर्स लाइक खरगोश, रैबिट, टॉर्टोइज, फिश. बिकॉज हमारे पास समय बहुत कम है, बहुत कुछ समझाना है आपको, इसीलिए कुछ आसान तरीके हमने निकाले. जैसे एक पेन एक तरीका है, ऐसे और भी तरीके हैं. देयर आर मेनी वेज so that you understand complicated things in a simple way. One, so that by the end of the day, जाने से पहले, before you leave, you will get a chart, each one of you, customized. आप सबके जो चार्ट बनेंगे, it is a panel of more than 10 doctors. I am just one of them, including allopathic doctor, Ayurvedic doctor, dietitians, for each one of you. आपके हर एक का मेडिकल जो हिस्ट्री है 10 के पास जाता है. देन ऑल 10 टुगेदर मेक सर्केडियन चार्ट, विल मेक सर्किट फॉर ईच वन ऑफ यू. दैट इज व्हाट यू विल गेट एंड विच यू हैव टू फॉलो. बट बिफोर यू गेट दैट, विल मेक यू डू दैट हियर इटसेल्फ. पहले तो आप यहां करेंगे, फिर घर पे करेंगे. नाउ व्हाट टू डू फ्रॉम हियर. अभी क्या करना है, देखिए आपके I have the history of all of you. आप सबके मेडिकल हिस्ट्री मेरे पास है, और मैं बाकी हमारे जो 10 डॉक्टर उन सबके पास है, राइट? ये समरी है सबकी, सभी की. तो अगर आप आके मुझे बोलेंगे आपकी प्रॉब्लम ये है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, बिकॉज वो तो है मेरे पास, राइट? दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस टू मी, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव दोस थिंग्स. बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन वेयर यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और वेयर यू डोंट एग्री, या तो आपको समझ नहीं आया, या जहां आप एग्री नहीं कर रहे हैं, आपको डाउट है, या आपको कुछ और लग रहा है, आपको एक क्वेरी शीट दिया हुआ, उसमें उसको लिखिए. एक बात याद रखिए, जितने सवाल होंगे उतना ज्यादा आपको समझ आएगा. जितने ज्यादा समझ आएगा उतना अच्छी तरह से अपना ध्यान रख पाएंगे. सो इफ यू आर हियर, यू हैव टू आस्क एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल. बट हाउ टू आस्क? The best way, you write it in the query sheet. All the query sheet will be collected by my team, that they will give it to me by that night. I'll read it. My tomorrow's lecture will be based on what you asked today, right? What you will ask today, tomorrow I'll bring one by one, I'll read and I will present it tomorrow accordingly. What you will ask tomorrow, जो आप कल पूछेंगे, वो हम परसों उसको बताएंगे. और जो परसों पूछेंगे संडे जाने से पहले, राइट? आफ्टर 1 वीक, कमिंग सैटरडे, विल हैव अ ऑनलाइन जूम मीटिंग. आई विल आंसर देयर, राइट? दिस मीन्स देयर आर मेनी स्कोप ऑफ आस्किंग. जब तक आपके सवाल खत्म नहीं होंगे, तब तक हम जवाब देंगे टू बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, राइट? तो खैर, टुडे इज द यस, हाँ बैठिए, देंगे.
जितने सारे पेशेंट्स हैं वो इधर लिखे हुए हैं, इंक्लूडिंग थैलेसीमिया पेशेंट और भी हैं। थैलेसीमिया हो या हार्ट हो या किडनी, थैलेसीमिया कम होते हैं पेशेंट, बट यहाँ पे हैं। हर पेशेंट को हम इंडिविजुअल लेंगे और हर पेशेंट का इंडिविजुअल होगा। तो आप में से हर पेशेंट को एक एक करके, जैसे मोतियों को चुन चुन के देखते हैं वैसे, ठीक है ना, भीड़ में नहीं, अलग अलग से, राइट। तो चिंता मत कीजिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ यहाँ तक आना था, बाकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये मत सोचिए कि अगर आपने नहीं पूछा तो कहीं छूट ना जाए, वो नहीं होने वाला, राइट। पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आप ठीक नहीं हो जाएंगे, राइट। तो चिंता मत कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो खैर आज यहीं तक, और इसके आगे की जो हमारी प्रोसीडिंग है, आपके वाइटल्स वगैरह चेक करने हैं। फॉर दैट यामिनी, या सभी लोग इसी फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर वाइटल्स के लिए पहुंचना है, सभी लोगों को इसी फ्लोर पर नहीं है। So see you tomorrow in the morning. All the best. धन्यवाद. Thank you. Now, Malaysians, we have a session at PTR at Dr. PRC at 9 a.m. At 9 p.m. No. बाकी सभी पेशेंट्स अपने वाइटल्स के लिए इसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाएं। और कोई फोन इसके लिए हमारे एडमिन स्टाफ को दे दीजिए। मेरे फादर को 13 इयर्स से क्रोमोफोनिक अस्थमा है और हम लिखिए, आप लिखिए।